1, 2, 3, 4. Hello and welcome everyone to Fitcom India's podcast sessions. And today we have a very special guest with us and a former colleague. मैंने काम किया हुआ है अमृता के साथ. I know her personally. A very wonderful lady. जो भी करती है बहुत अच्छा करती है and she's a known name in the fitness industry. Yoga especially. She has been on various TV channels as well. Or welcome Amrita to the show. एंड Thank you. आज हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करने वाले हैं और बिफोर वी गो देयर सबसे पहले चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा वो ये कि हाउ डिड यू कम इनटू दिस इंडस्ट्री? So fitness was never in my mind that I will take it as a career or anything. But yes, I was into sports during my childhood. And when I got married in 2008, then I delivered a baby in 2009. And from the corporate, I moved to be a housewife, taking care of the family and everything. So the first, uh, what do you say? The first hit to me was in 2009 after my first delivery, Okay. wherein I got diagnosed with umbilical hernia. And yeah, so now down the line with all the knowledge and everything, now I understand it was the reason of hernia was because of bad and weak muscles in my core, which could not take the baby load, and hence it got herniated. So Right. that was my first thing. And because of that, throughout post delivery there were complications that I was not able to feel healthy in terms of I could not cough, I could not sneeze, lifting anything I used to get some pain around my navel. And yes, so that came into my mind that just one delivery and I'm like this, and I want to play with my baby, and I'm being into sports. I was a national level into track and field. I've been Wow. to that level. I was a state level for volleyball, kabaddi. I've Wow. done that. Badminton inter school champion, district level champion. So I was pretty active during my school days. Wow. State Then I level. got yeah, state and nationals. I've played both, and then I did good with my corporate journey as well. I worked with very good companies, and then I got married. So this one delivery, and I was feeling like I was not feeling my age. When we say na ki, this is your age and you should look good, Yeah. this is just the beginning. And I got married pretty early. I was 24, and I guess 24th I delivered a baby. 24, 23 I got married, and then I got delivered a baby, and I was not looking as per my age. I used to look way older, weak, and I was mentally not fit because of that. Because physically, when you are in pain, you don't feel mentally fit, right? So that all happened. Then again, as my baby was growing, everything was good. I still managed. 2013, I delivered another baby. My another daughter was born. With that, everything went for a toss because again, during that 4 years of babysitting of my daughter and being home, I never worked out, of course. So workout is not in the Indian culture that you are asked to go to a gym, right? Until and unless you do not have any requirement or you have been asked by the doctors. So बिल्कुल. gym was never important. It was never a part of your lifestyle. So that never happened. सो आपके कहने का मतलब ये है कि टिल 2013 you Mhm. did not go to the gym. I never saw a barbell. In fact, barbell को तो I didn't even know कि barbell को barbell बोलते. We used to call rod or dumbbell as usual. जो हमारा layman language used to say. So women were never appreciated to be a part of the gym. ये तो अभी I'm very happy that now everybody is so good that they want to go to gym and they understand that. बिल्कुल. But back then it was not into trend. It was not socially accepted कि आप जिम जाओ. अच्छा जिम क्यों जा रही हो? सुबह सुबह घर में कर लो, योगा कर लो घर में या कुछ कर लो. So that was it. So हम्म. yeah, 2013. So first delivery gave me umbilical hernia. The second delivery, because during these 4 years there was no fitness related thing, no health. तो वही खाना चल रहा है, वही दिनचर्या चल रही है. Everything was same, apart from some add-on medicine given to me for my pain and for the umbilical pain and everything else. Right. So yes, the second delivery gave me a major coccydynia where your tailbone shifts. Right. So it just moved on to one side. And
a gap in my left side of my spine. So because of which I could not sit straight. So when I say sit straight, as in 2013 after delivery, for the next couple of months, and I would say 18 months, was that I could not sit straight. So back then, the only thing I used to pray to God कि भगवान I can sit properly. मुझे कम से कम बैठना पूरा मुझे बैठना है. I want to sleep. I could not sleep flat. तो मेरे को पिलो चाहिए रहता था between my legs on my side. To turn from one side to the other, I could hear my bones. My pelvic used to make sound. वो क्रक Wow. करके sound. I used to wear a belt, and if I had to get up from the bed or from anything, I had to ask somebody. एक मिनट हाथ पकड़ना ना, तो बेल्ट बांध के I used to take support and then I used to go. Okay. So that's where I got myself checked in spine injury center, Vasant Vihar में तो है. So the doctor said they put me on medicine. So even the doctor never said that you should be making yourself physically fit by building endurance, taking care of your muscular strength and everything. Nobody told me that. I was on medicine for 4500 mg, 3 tablets, like 1500 thrice a day. So 15 days का वो tablet का course होता था, and then again you have to go and get yourself checked. So 15 दिन तक, it's just that problem was there, but you are not feeling pain because these were just painkillers. So I used to take that, but it was not helping me. I went into depression, a kind of depression. It's a very strong word, which people now use it very commonly. कि अरे बड़ा depressed है. No, Mm. because back then my doctor asked me, you cannot lift your baby. आप बच्चे को गोद मत लेना. आप आटा मत गूंदना. Now when I say आटा मत गूंदना, my nutrition was very bad that time. So Mm. घर में gluten ही gluten था. सुबह दोपहर शाम. तो वो गूंदना पड़ता था. He's like, आप आटा नहीं गूंद सकते, आप सीढ़ी नहीं चढ़ सकते. Doctor specifically asked me. राइट, सो ये दोनों डिलीवरीज के टाइम में सेम सिम्टम्स थे आपके? हाँ, पहले में तो अगेन आई वाज वीक, हम्म, राइट? तो आपको हर्निया हो गया बिकॉज टच वुड बोथ माय बेबीज वर प्रीटी हेल्दी एंड बोथ वर अबव 4 kgs. राइट. Yeah, so that was too much of load for my abdomen to hold. So yeah, that happened. And when the doctor said that आप कौन से फ्लोर पे रहते हो, I said I'm on the first floor. He's like उससे ऊपर जाना भी मत, because I would appreciate अगर आप सीढ़ी ना चढ़ो. तो आई वाज लाइक ओके. तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मैं सो नहीं सकती हूँ, और मैं बेबी नहीं उठा सकती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? फर्नीचर. हम्म. एंड आई हैव बीन राइडिंग बाइक्स क्लास since I was in class 6, like 6th standard से my dad taught me how to ride so my first bike was bullet. तो अभी मैं बाइक भी नहीं चला सकती थी. वैसे. मैं बाइक पे भी नहीं बैठ सकती हूँ, मैं कार में भी नहीं बैठ सकती हूँ. किधर जाने के लिए मुझे सोचना पड़ता था. आई नीड अ डोनेट कुशन. वो एक टायर ट्यूब जैसा रहता है, उस पे आपको बैठना होता है, सो दैट योर टेल बोन डजंट टचेस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू टिल्ट ऑन वन साइड, और ऐसा, या तो दीवार पे टेक लगा के खड़ी रहती थी कि ऐसे. देन आई गॉट फाइनल राउंड व्हेन आई मेट द डॉक्टर एंड आई वाज पिस्ड ऑफ, एंड आई रिक्वेस्टेड डॉक्टर, सर इसका कुछ तो होगा, आप मुझे बताओ, मतलब सिंस हाउ लॉन्ग एंड फॉर हाउ लॉन्ग एम आई गोइंग टू बी ऑन पेन किलर्स? बिकॉज पेन किलर से 15 दिन अच्छे होते हैं मेरे. बिल्कुल. बट वो जो 16th डे पे जो मैंने 15th वाली गोली खाई है, उसके बाद मुझे तुरंत ऐसा होता है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, बिकॉज मुझे दिखवाना है. एंड यूज्ड टू अगेन डायग्नोज सेम पेन एंड एवरीथिंग. सो आई आस्क्ड द डॉक्टर, पेन किलर तो सप्रेस कर रहा है, बट व्हाट एल्स आर वी डूइंग फॉर इट? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी सोल्यूशन. आप तो पेन किलर दे रहे हो ना, तो सर मैं और क्या करूं? आपने बताया कुछ उठाओ मत, तो मैं तो रेस्ट पे ही हूँ. But being living in a nuclear family, when you do not have anybody to take care of your baby, you have to be with that, right? तो बच्चों के साथ 50 काम होते हैं. So then doctor said, we'll go through a surgery, we'll put a tool through the anal and we'll correct your bone. So you'll have a small like cut, and then आपको 2-3 महीने का बेड रेस्ट. आई वाज लाइक बेड रेस्ट? इज लाइक हाँ, फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा. सो आई सेड दिस विल बी करेक्टेड. द डॉक्टर वेरी क्लियरली सेड हाँ करेक्ट हो जाएगा. मैंने कहा ओके फाइन, सो बाद में नहीं होगा? ही इज लाइक नहीं, आई डिड नॉट से दैट. सो आई सेड सो देयर इज नो गारंटी कि आप वो सर्जरी करोगे और मैं 4 महीना बिस्तर पे रहूंगी, 2 महीने का बेड रेस्ट, उसके बाद रिकवरी रिहैब चलेगा, एंड उसका भी कोई देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मी अश्योरेंस कि वो वापस नहीं आएगी. ही सेड यस. देन ही सेड आप योगा ट्राई कर लो. And then they give you specific chart. Every doctor has that, where they give you back extensions, right, on the prone position, where you lift yourself, Superman pose and all that. He's like that again. That is abhi hame samajh mein aata what is the importance of it. So Absolutely. back that time,
when I said ki theek hai, I did some Google and I looked for a coach for myself. So when I came across a coach and I asked him कि भैया योगा कराने का आप कितना लोगे, कितनी classes लगेंगी and all that. So the trainer very rightly said, उन्होंने बोला गारंटी नहीं है मैम, देखो 3 हफ्ता, 3 महीना या 3 साल, it could be anything. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. I can teach you, but I cannot guarantee you by when you will be able to sit और ये correct हो जाएगा. It will definitely help you, but there is no time frame. So as a customer, I would say at that time I was like ये तो पैसे बना रहा है, because इसने मुझे कोई गारंटी नहीं दी. And the coach was right, because how would a coach say वो कैसे गारंटी देगा, right? So the coach was right, but I was like, तो मैंने खुद से कैलकुलेशन किया, he is charging 8,000, so 8,000 into bare minimum, चलो 3 महीना पकड़ते हैं कि 3 महीने कर लेंगे. So I was like 24,000. Why not I learn it, because he is going to just give me specific things as per my diagnosis, whatever problem he's not going to teach me anything extra. So then I said, fine. Then I Googled around and I got to see a course which was for 35 or 30,000 for a yoga course in Pitampura. So I was like, chalo, main kar leti hu. So I just went because I wanted to speak to the lady who was teaching it. मुझे उनसे ये पूछना था कि मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ. So I used to sit into वीरासन. जब वज्रासन में पैर घुटने मोड़ के बैठते हैं ना, वैसे I could manage myself. तो मैंने कहा मैं बाकी कोर्सेस में कैसे आसन करूंगी. So she said, I'll give you options, variations, आप try करना and then you have to practice and all. So I said to begin with, then I took permission from my husband कि कर लूं ये वो, पैसे वैसे इकट्ठा करके I somehow joined the class. So one thing which changed it, from there it all started. So I enrolled myself for this course. So as I said, that 2013 was my delivery in October. Right. 2015 in August, I joined this course. इट वाज अ वीकेंड. हाँ, वीकेंड कोर्स था. तो ऑलमोस्ट 18 मंथ्स के बाद, 1.5 साल हो चुका था मेरे ये दर्द का चलते चलते ऊपर नीचे. सो 2015 व्हेन आई जॉइंड दिस कोर्स, वीकेंड कोर्स था, 3 आवर्स का था. उसमें बहुत सारा योगा का ज्ञान मिला, आसन अभ्यास एंड एवरीथिंग. सो या इट वाज एडिंग सम वैल्यू. सो आई वाज मीटिंग मोर पीपल. सो एज आई सेड इन द बिगनिंग के थोड़ा डिप्रेशन था, बिकॉज आई कुड नॉट ट्रेवल. तो मैं मेट्रो में खड़े होके जाती थी. आई यूज्ड टू लिव इन ईस्ट दिल्ली दैट टाइम. तो प्रीतमपुरा तक खड़े होके जाती थी. तो रिक्शे पे भी मैं बैठ के नहीं जाती थी. आई यूज टू होवर ऑन द रिक्शा, बिकॉज आप बैठ नहीं सकते, झटके लगेंगे. ज्यादा आधे पंप पे बैठ के जाते थे क्योंकि वैसे ही दर्द हो रहा है. I mean, it's funny to listen to it because picturize करते हुए आपको funny लगता है, but it's a very painful thing. It's a आई नो, बिकॉज वो जो पेन ट्रिगर करता है ना, दैट्स लाइक दैट्स सम अदर काइंड ऑफ पेन, राइट? सो आप इमेजिन, आप फ्रेम वाले रिक्शे पे बैठते हो, तो मैं ऐसे पकड़ के आधा लटक के जाती थी. बट बिकॉज मुझे उसका सोल्यूशन चाहिए था. एंड द रीजन आई वांटेड, बिकॉज बीइंग इन स्पोर्ट, आई वांटेड टू प्ले विद माय डॉटर्स. यार मैं इनके साथ भी नहीं खेलूंगी. सो दैट वाज इन माय माइंड. यार माय डैड हैज टॉट मी सो मच कि बाइक भी सिखाई, क्रिकेट, बास्केटबॉल. आई यूज्ड टू प्ले विद बॉयज. I never had many of girlfriends in like, but being मेरे बड़े भैया है, तो हमेशा भाई के ग्रुप के साथ या अपने दोस्तों में बहुत खेला है, बहुत ही खेला है, मतलब हर काम. बट दिस इज नाउ आई गॉट माय डॉटर्स, मैं इनके साथ नहीं खेलूंगी. सो दैट वाज लाइक, मुझे बहुत वो चीज ना बहुत पिंच करती थी. दैट आई वांट टू मेक माय डॉटर्स लाइक द वे माय डैड हैज केप्ट मी, कि खेलो, धूम मचाओ, मार पिटाई जो करना है करो, फुल ऑन मस्ती करो. बट वो नहीं हो रहा था. आई वाज लाइक, जब सोए नहीं हो अब रात में, सुबह सड़ी हुई मम्मी उठेगी आधी cranky, लो दूध ले लो, ये ले लो, वो ले लो, but you're not happy from inside. So when I see myself, when I compare myself, I also developed anger issues because of the pain in the body, because I wasn't taken care of the way I should have been, neither by the doctors, neither for some personal reasons also, because एक taken for granted होता है ना कि 1.5 साल से तुम्हारा दर्द ही नहीं खत्म हो रहा है. Right? When you have that constant thing, then others also like, ना यार इसका तो यही है, बेल्ट में ही रहती है. So what people back then who know me, those who have seen me, few of my friends, so they have a very different picture of mine, because for almost 1.5 years nobody saw me without belt. तो कपड़े के नीचे भी बंधी ही रहती थी हमेशा, और मैं उसके बिना चल नहीं पाती थी. So yes, the journey began in 2015 with the first course which I did from Pritampura. So उस time पे, so sorry to cut you here, but उस time पे you were doing your job, corporate job, you were in their corporate. नहीं, वो तो back then, because of so many medical condition and everything, I was home. I was absolutely a housewife. I wasn't doing. So I had almost 8 years of career of my corporate. I was at my peak. I was performing very good. But because of all this, I had to cut myself off. Wow. Because जब आप घर में ही नहीं बैठ पा रहे हो, आप 8 घंटे की जॉब
जो होती है, then your travel and everything, I could not have managed that. So hence I just completely और became a housewife and all that. वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन तब था नहीं. तब तो था ही नहीं यार. Though we used to go and I was working with an MNC, right? Converges में थी. My first job, I'm like back then, 2007 and 8, I was a part of Converges. So Right. I got promoted, even promoted just because of my pregnancy and everything. I had to quit my job. Right. So yeah, things would have been very different अगर मैं अभी वहीं पे होती. So yeah, but I'm glad wherever I am, I'm at the best spot. Obviously, it's all written. It's all destined, yeah. So Hmm. I feel it that way. So yes, when I started my training for yoga, as I mentioned, weekend course था. So वो वीकेंड कोर्स में सिर्फ सैटरडे संडे आप जाते थे और बाकी के 5 दिन तो मेरे पास थे. So I used to see YouTube channels for or whatever asan were told to us. There was a book given. So I used to read and go through, and I used to understand. अच्छा ये वाला मसल है, ये है, and then I used to follow a flow. अब वहां पे आपको 3 घंटे में कितना ही पढ़ा देंगे. So I used to just tell the benefit and how to get into the asana, how to hold, and how to come out of it. So that's what the basic I learned. And I started learning flows through YouTube. कि चलो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं. Within a month, I mean, like I did not even finished my course. Within the half of my course, I could realize IPL चल रहा था, and I went. मैं morning में अपने society park में practice करती थी. जब बच्चे सो रहे होते थे मेरे, so I used to go and practice, and I used to come back. IPL चल रहा था. My husband was watching TV. I went home and I jumped on the sofa. I was like, लगाओ लगाओ, टीम बहुत अच्छा खेल रही है, ये whatever मुझे देखना है. मेरी छूट गई थी तो please लगा दो. And he was like, तुम सीधा बैठी हो. And I was like, हाँ तो. He's like, तुम सीधा बैठे हो. मैंने कहा आगे बोलो ना, सीधा बैठे हैं, आगे बोलो. He's like, you're sitting without the downward cushion और तू सीधा बैठी है. And that was the time I literally jumped, and I was like, I literally jumped off, and I tried hopping and checking myself. साला पेन नहीं हो रहा है. And that too I was not wearing belt that day. क्योंकि Yeah. मेरा belt हट गया. And I could see, then I twisted and turned myself. मैं झुकी सब करके आई थी. And I was like, yes, I'm actually sitting straight. And that is what gave me confidence. एक आपको अंदर से आता ना यार, yes, you can do it. So Absolutely. that's where, so that was a turning point. Yeah. 3 months का वो कोर्स किया, and before I could get my certification, I already had a PT, Urban Clap के through. मैंने Wow. रजिस्टर किया था वहां से. So I got a nearby personal training, जो उनको मैं सुबह 5 to 6 सिखाती थी. Wow. So yeah, then since then there is no stopping. And then I kept on upgrading myself. 2017, I did my K11 course. Right. Yeah. So Yeah. and then that's how it is. So what kind of so आज के टाइम में योगा के अंदर डिफरेंट वैरायटीज और वेरिएशंस हैं जो कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल योगा और उससे मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि योग इज योग. ओके, अब उसके अंदर जितनी भी वेरिएशंस अब आई हैं वो मे बी मार्केटिंग हो सकती है या बेचने के तरीकों से नाम चेंज कर दिया उन्होंने. फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्वा योगा या फॉर Power yoga. पावर योगा, गोट योगा फॉर दैट मैटर. कहीं कहीं पे तो मैंने देखा था बियर योगा. सो दीज आर ऑल द मार्केटिंग थिंग. मुझे ऐसा पर्सनली बिकॉज योग का इन सब से क्या कनेक्शन है मैं ये सोचता हूँ. सो व्हाट काइंड ऑफ योग डू यू स्पेशलाइज इन इफ देयर इज एनी? Yes, absolutely. There's a mother of yoga. When we say that from this particular form, everything else have been originated, have been created. Right. So Hatha Yoga. So I'm masters in Hatha Yoga. So I Wow. did my masters, and I trained under Bharat Shetty for Ashtanga Yoga from my school. So I became a Ashtanga Yoga teacher. So that is also a part. So that comes within Hatha Yoga. So it's like Hatha Yoga, then you get Ashtanga Yoga, Ashtanga Vinyasa, which is हठ more powerful form. हठ योग के अंदर अष्टांग योग आता है. Ashtanga Yoga. So Ashtanga, so because everything has been originated from that. So it is a style of yoga which goes in a sequence, in a flow, right? Now yoga, when we say योग, अभी वो योग से योगा हो चुका है, right? So योग में जल्दी पकड़ता नहीं है. लोग पूछेंगे हाँ तो दिल come to योग क्या? Then I have to miscorrect myself. मेरे को वापस वो correction हटाना पड़ता है. Correction चलो ठीक है, आपके लिए गलत बोलते हैं. So this is our yoga. Right. So when you're coming to this, we are moving on to our next segment, that is the teaching style and philosophy. So yes,
Continue. So for yoga, I have almost like 25,000 plus of hours of teaching and training experience so far added. Wow. I've done about 1,500 plus of corporate sessions in the offices and training with multiple gyms and people around. And I've trained trainers also. So I specialize in Hatha Yoga, and I take both of them as my forte, my Ashtanga Yoga and Hatha Yoga. So I train for both. Okay, and what's the difference? I mean, क्या है इसका? If you The could. difference is Hatha Yoga is more stable. It's about like holding the asana and then syncing it with your breath. So you get into the asana, you hold it for a couple of breaths and you stay in it, and that's how you. So it goes by like pause. वो रुक रुक के एक आसन आप करते हैं, हर एक आसन को स्थिर करते हैं, फिर आप दूसरे आसन में जाते हैं. अष्टांग योगा थोड़ा सा डायनामिक हो जाता है बिकॉज इट्स अ कंप्लीट सीक्वेंस. उसमें आपको एक सीरीज होती है आसन की. अगर आप प्राइमरी सीरीज और इसकी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, हर अष्टांग स्कूल की एक अलग सीरीज है. So it has around like 50 आसन, some has 75 आसन, some has 100 आसन. So advanced तक 100 आसन है. So हर आसन में आपको एक सूर्य नमस्कार करके आप उसको करते हो, फिर होल्ड करते हो. Then again you go back, you do an सूर्य नमस्कार followed with that आसन. So Right. that becomes more dynamic. Fantastic. So, So that's the basic, yeah. so you learned योग. Mhm. वो starting point था कि वहाँ Mhm. से you started getting some sort of results in your body. Yes. And then how did it transition to fitness certification? योग एक अलग हमारा सेगमेंट है और फिटनेस सर्टिफिकेशंस एक अलग सेगमेंट है. सो वहां पे कैसे ट्रांजिशन हुआ? So, like once I became a yoga coach or a yoga teacher, या then I was teaching everybody. So I started taking classes and everything. But there is something which I feel, which many of the yoga schools they miss onto it. They do not give you a detailed thesis when I say, or a detailed knowledge about it. कि when you talk about anatomy, they just give you a superficial thing. कि राइट. अगर हाथ है तो हाँ चलो shoulder. Shoulder what? There हम्म. could be a pain, frozen shoulder है या अगर कोई shoulder है. So how to diagnose it, they don't tell you that, they don't teach you this. I mean, the school which I came from, I never got that, right? So वो detail नहीं था. And there are like 650 मसल है, तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं कि अपर थाइस पे आपको ये फील होगा, लोअर थाइस पे होगा. Again, subjective. We do not put these anatomical terms to the client, but it becomes really easy as a coach to understand somebody. And Nowadays, everybody has some problem. now, Yeah, go ahead. are you talking about all the yoga courses in India which have the same basic approach जहाँ पे Mhm. anatomy पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होगा? अभी भी वैसा है या फिर कुछ चेंजेस हुए हैं अब जाके? I would say we have still not much of a difference. अच्छा. Of course, there are schools who are now getting very better in detailed teaching, which is now improving. But when I see, I'm in the profession right now, I interview coaches also, राइट. right? So I see a huge resume talking about this much years of experience, have done diploma, have done masters and blah blah blah. And you really get excited looking at such resumes, and you think you are going to interact with somebody with so much of knowledge. But when राइट. you talk about a very minor anatomical terms, or if you ask them कि अगर आपको फिजियोथेरेपी की अगर एक रिपोर्ट दी जाए, so हम्म. can you tell, right? So can you tell what part and how are you going to diagnose that? They don't know. हम्म. They actually do not know. And that what breaks my heart कि यार इतना knowledge है, इतनी सारी degrees कर ली, and you still lack on this part. ये तो बहुत basic हो गया ना. बट डोंट यू थिंक कि इसके लिए हम थोड़ा सा और अगर स्पेशलाइज, फॉर एग्जांपल सारे कुछ बेसिक सर्टिफिकेशंस हैं, Mhm. उसके बाद कुछ दूसरे सर्टिफिकेशंस होते हैं जहाँ पे स्पेशल पॉपुलेशन में डील किया जाता है, Yes, वो yes, आप yes. कहना चाहते हो कि मतलब इनकॉर्पोरेट करके थोड़ी बहुत नॉलेज लेके किसी को आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में, ऐसा? Exactly. Like ये जो 1 month, 3 month courses है ना, they do not make you a yoga teacher or a yoga trainer. I want everybody to understand. ये भी एक बड़ी वैसी चीज है, टीचर मतलब एक महीने के अंदर आप टीचर बन सकते हो. फटाक से टीचर आपने वो 35 मैक्सिमम आपको आएगा, 35 आसन आपको सिखाए जाते हैं. ठीक है, आउट ऑफ दोस 35 आसन, do you think you are going to train and teach somebody who is in pain? You have no clue. You can put the other person back into the injury. आप उसको trigger कर सकते हो. और Absolutely. ऐसा हुआ भी है. I mean, बिल्कुल. I won't take the name, but there was some ex-person. This person was healed completely with the back pain, हम्म. right? But
wahi same asan, the other trainer, the other coach have pushed her to do it, and then she was bedridden. She's like, मेरे को जाना है, मेरी therapy शुरू हो गया, Amrita. And then I got a call, Amrita, this was all healed and cured, but because now I was out of touch, now again I do this asan, and somebody pushed me कि उसने करवा दिया मुझको. They were like, no pain, अरे मैम थोड़ा सा और कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है. So that wrong approach. आप flexible हो, आपका client नहीं है. Go Right. slow. You need to understand. You need to understand there is a very thin line between pushing, एक होता है stretch का जो pain है, and then making somebody win. So that person triggered the same pain which got healed for मतलब 2 साल 2.5 साल उसको Right. पेन था वो जो कि सही हो गया था. And because of one bad session, one push, the lady was back into the same. वो वापस उसका 2.5 साल खराब, जो 2.5 साल से वो जिस पेन में थी निकल के आई थी, she was better. One session put her back into the same spot, and hence they do not have faith in the coaches. बिल्कुल, बिकॉज मेरे को ये भी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेनिंग. अगर किसी को कोई मसल इंजरी है फॉर इंस्टेंस, या फिर मसल रिलेटेड कोई भी स्ट्रेन या स्ट्रेस होता है, स्ट्रेचिंग में नॉट बी द आंसर. आप ऐसा नहीं Absolutely. कि आप हर बार जाके स्ट्रेच कर रहे हो या फोम रोल कर रहे हो. दैट में नॉट बी द आंसर. प्रॉब्ली हो सकता है आपको सिर्फ रेस्ट करना है अभी कुछ दिन के लिए, Yes. है ना. लेकिन कोचेस को ये लगता है नहीं, हम आपका सब योगा से बिल्कुल सब ठीक करवा देंगे. See, I mean that's why I always tell people your strength and flexibility goes hand in hand, एब्सोल्युटली. right? If you're too flexible, you're prone to get injured. And I एब्सोल्युटली. tell you, योगा का इंजरी का rehab बहुत लंबा चलता है. To be precise, people take it अरे सिर्फ योगा से सब कुछ होगा. I beg to differ. मैं हाथ जोड़ के सभी को with respect बोलूंगी, yoga is everything. It adds too much of value, but you need to understand stretching is not the answer of a weak muscle. You एब्सोल्युटली. tend to make it more. आप उसको और disaster stage पे डाल देते हो. आपके मसल फाइबर इतने ढीले हो चुके हैं, इतने वीक हो चुके हैं कि आप उसको स्ट्रेच कर करके वो सुपरफिशियली आपको बड़ा अच्छा लगेगा. थोड़ा सा किसी ने खींच तान दिया, आपको एक आसन में घसीट दिया, 1 घंटा बड़ा अच्छा लग रहा लाइफ. अगेन वन बैड मूव एंड यू आर बैक ऑन बेड. आपको फिर So, वही हो जाएगा. so guys, this is extremely important point which we just discussed. Crucial कि जब भी अगर आपकी मसल वीक है तो stretching is not the answer at that point. इज नॉट द आंसर. एब्सोल्युटली इट्स नॉट एट ऑल द आंसर. स्ट्रेंथ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. Right. स्ट्रेंथ आपको करना पड़ेगा. एंड व्हाई आई से दिस, बिकॉज ओके ना, बीन देयर डन दैट, कि अभी जस्ट बिकॉज आई एम अ स्ट्रेंथ कोच आई एम सेइंग दैट नो. I'm saying it for the fact because I've been through that pain and I know what difference did it gave it to me. My muscles were really weak. So yoga से मेरा वो ठीक क्यों हुआ? Because I was holding and I was doing those flows. तो मेरे जो glutes muscles या मेरा posterior chain जो भी weak था, I hold it. That was also a part of strength only. योगा के अंदर में भी आप करते हो, स्ट्रेंथ करते हो, बट उसको आपको एक नॉट ऊपर कैसे जाते हो जब आप उसमें कुछ ऐड करते हो. आपका मसल अपने आप में ग्रो नहीं करता है कि बस अच्छा खा लिया और वो मसल बड़ा हो जाएगा. नहीं, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, आप उसको काम देना पड़ेगा. आप जब तक उसको वेट ट्रेनिंग एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी इन एनी एज. Right. My daughters are like what? My daughter is 13 and 9, and my 9-year-old, she lifts 5 kg dumbbell एक हाथ में. सो बिल- 5 kg अगर वो उठा सकती है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डॉटर्स. यस, बिकॉज वो मैं ऑफकोर्स उनको पूरा जिमिंग वो नहीं, बट मैंने बेसिक सिखा रखे हैं कि आप अपना लगेज खुद उठाओ. अगर आप मेरे साथ ट्रेवल कर रहे हो मम्मा के साथ, आपका अटैची अलग है, मेरा अलग है, आप करो. सो यू शुड बी मेकिंग देम फंक्शन. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि हम्म. आपको जो चाहिए, अब जितना लगेज भरना है भरो, बट वो लगेज आप उठाओगे. सो आई डोंट कैरी माई डॉटर्स लगेज. वो जितना तुमको रखना है रखो, एंड दे आर वेरी हैप्पीली डूइंग इट. So हाँ. I feel proud, and that's why what makes them very strong. When I compare my daughters to any other child of their ये own age, वो बहुत मैटर दिखता है ही मुझे उसमें. ये बहुत ही अच्छा तरीका है वैसे. आपको अपना लगेज खुद उठाना है तो उतना ही भरो जितनी आपको आप जरूरत भरो जितना आपको चाहिए, इसमें जो रखना है रखो, टॉयज रखने हैं, बुक रखने हैं, जो मर्जी भरो, बट ये ड्रैग करो, लिफ्ट करो. इवन ऑन द स्टेयर्स एट द रेलवे, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, तो अगर एस्केलेटर्स तो होते नहीं है हर जगह, तो आप स्टेयर्स है. हर प्लेटफॉर्म के हर प्लेटफॉर्म नंबर पे आपको एस्केलेटर नहीं मिलेगा, वो एक बार चढ़ने को मिलता है. बिल्कुल. So if you can go 40 stairs up and down, I'm happy. जितना भरना है, because I'll not pick it up. Be it हम्म. your school bag, be it your luggage, do that for yourself. Fantastic. मतलब this is a very very good example and a very good teaching also to kids, because पेरेंट्स के दिमाग में सबसे पहली चीज जो ये आती है कि
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जब भी कोई चीज, और ये मैं भी एम्फेसाइज करता हूँ, अपने क्लाइंट्स को एम्फेसाइज करता हूँ या लोगों को इन जनरल ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब सिर्फ जिम में जाके डंबल और बारबल उठाने से नहीं है। आप इन डेली लाइफ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पिक करते हो, वो एक तरीके की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, और उसको लगातार करते रहना जरूरी होता है फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ, विच इज एक्सट्रीमली गुड। ये बहुत ही अच्छी मेथोडोलॉजी, और मुझे लगता है कि जो भी कोई पेरेंट अगर देख रहा होगा भी इसको, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सबक हो सकता है, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दिस इज अ वेरी टबू थिंग, है ना, कि बच्चों के। Yeah, they say like all the mothers like, अरे भारी मत उठाओ, हड्डी खिसक गई तो, कमर खिसक गई बच्चे की तो। आई लाइक यू हैव नॉट मेड देम ऑप्टिमल ना, तो और खिसकेगी, वो जिस दिन करेगा उसी दिन इंजरी हो जाएगी। और उसके ऊपर एक और चीज, जिम, अगर कोई जिम जाना चूज करता है, जिम इज अ वेरी वेरी सेफ प्लेस। ओके, Absolutely. इट्स लाइक अ लैब वेर यू आर एक्सपेरिमेंटिंग विद सर्टेन थिंग्स अंडर सुपरविजन। अंडर सुपरविजन, यस, आई मीन लाइक गाइस, आई प्लीज मार्क इट, अंडर सुपरविजन। खुद का ट्रेनर मत बनिए यूट्यूब देख के। लेकिन पेरेंट्स आर ओके सेंडिंग देयर किड्स टू प्ले सॉकर। हम्म। फुटबॉल में सबसे ज्यादा इंजरीज होती हैं, बिकॉज आप गिर सकते हो, आपका एसीएल इंजरी हो सकता है, बहुत सारी हो सकती हैं, बट वो दिमाग में नहीं आता कभी भी। पर जिम के बारे में हमेशा दिमाग के अंदर ये आता है, राइट, कि हाइट छोटी रह जाएगी या कभी कुछ हो जाएगा। एंड टू टेल पीपल दैट अमृता's डॉटर इज ऑलमोस्ट, यू नो, She's सिमिलर। gone half an inch above me. I'm 5'9" and she's 5.9 and a half. So, or And she's just 13. Yeah. and she's 13, right? Yeah, she's 13. And she's been lifting weights like this, the way you were telling, अपना I briefcase. also posted a video, a small video during the lockdown, I guess 2020 का ही एक वीडियो है, where my daughter is lifting, हम सबके घर में वो तेल और घी के पीपे आते हैं ना, बड़े वाले cans, हाँ, right? So that's almost like 15 kg. wow. So yeah, so my room was on the second floor and she got me. She asked me, "Mama, I got it." तो Yeah, मैंने कहा लेके आओ, yeah. and that time she was like me. I was like, yes, you. You want to have that ghee, bring it on. So she lifted with her bare hands without anybody's help from the ground floor to the second. So like 3 मंजिल चढ़ा के ऊपर लेके आई है, and I Wow. posted that video. I remember that one. So, Yeah. and then when I was in Noida, when during the lockdown, we had nothing to do. We literally had nothing to do. तो हमारे पास, आपने भी वीडियो डाली थी वो जो लिफ्ट की थी, यू रिमेम्बर, यू लाइक जो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं आप रनिंग का ऊपर नीचे, आई मेड माई किड्स डू इट. So Right. 15 floors. I mean, my kids were like 2 साल छोटे ही थे. The younger one was 7, the elder one was 11. So हम लिफ्ट से नीचे जाते थे और वहां से टाइमर लेके ऊपर आते थे कि कौन पहले आएगा. सो बिल्कुल. अब सबका एक था कि 11 वाले तुम्हारा इतना है. तो हर बार का चैलेंज ये था, जो लास्ट टाइम टाइम है या तो उसको इक्वल रखो या तो उससे नीचे जाओ. अगर आप उससे नीचे करोगे तो आई गिव यू अ ट्रीट. तो वाह. देन वट एवर यू वांट आई मेक यू ईट दैट. तो वाह. फिर वो मैं बना के दूंगी. तो दैट्स हाउ वी प्लेड. बट आई नेवर वांटेड माय डॉटर्स टू बी काउच पोटैटोज, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आप एक बार पड़ गए इसमें ना, जो मेडिकल टर्म्स हैं, आप दवाइयों के चक्कर में पड़ गए ना, यू आर नेवर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज देन यू आर अ लेजी बम. Right. So how do you ensure जब भी you take on a client, so now you know, I mean, योग और strength training दोनों important है. So how Yes. do you track your clients' safety progress while incorporating these things? So first is we start from the basic. So Hmm. before I say yes of training and teaching anybody or somebody just hitting the training, I sit with my clients. I understand there is a proper form, right? So assessment form, I would say, wherein I ask questions: why the person wants to train, what is the goal of that person, and what were the past injury, or if the person, he or she, is on any kind of medication, so what is that medication for, Right. or so that's a basic. Because before I make somebody do any kind of lift or any kind of asana, I need to know that, right? So that not just gives me an assurance that yes, I'll be training the person correctly and rightly, taking care of the past injury or medical history. It also gives you a guided umbrella as a coach, Right. राइट. कि अब अगर गॉड फॉरबिड अगर किसी को एकदम से कोई उसका इंजरी ट्रिगर होता है, Hmm. बट द क्लाइंट हरसेल्फ हिमसेल्फ डिड नॉट टेल यू, Hmm. Hmm. तो Hmm. एज अ कोच मैं उस पर भी बोलूंगी यू आर सेफ, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन वाज नेवर पास्ड ऑन टू यू. So Yes. you are not responsible. And once you know everything, जब ये डेटा आपके पास एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, it doesn't take much of a time, but it definitely gives you
a lot of confidence कि आपको पता है उसे क्या नहीं कराना है, right? How to take care of that person, Absolutely. right? कि इसको what if somebody says नहीं मुझे लोअर बैक में मेरे को डिस्क पॉप जो हुआ था, जैसे डिस्क का प्रॉब्लम था, इट्स बीन 2 years 3 years, सो Right. देन यू नो कि उसको फॉरवर्ड बेंड तक कहाँ तक, मतलब वो आपको एक असेसमेंट का एक आइडिया दे देता है कि हाँ भाई इसको क्या चीज कम करानी है डिपेंडिंग ऑन द पर्सन प्रेजेंट स्टेट ऑफ फिटनेस, Right. Right. right? So once you get all these data, then before I again proceed with it, basics करा के देखते हैं हम कि कितनी range है, कितना क्या है, not depending on the individual's range of motion and everything. That's how you design a program, right? Even with the group classes of yoga, because most of the people love taking classes of yoga, not one on one, but in a group, because that's a little more happy place for them. कि Mm. चलो सबके साथ मिलके करेंगे. So even in that, irrespective you're training one on one or in group, as a coach, it is your responsibility that you're very clear with your instructions. Mm. Right? Not just about knowing that person. Now people come up and say 10 लोग थे वो एक को हो गया मैं तो सभी को करा रहा था. It बिल्कुल. is your responsibility. It is your client. बिल Very simple. You cannot say it as an excuse कि 10 में से एक को हो गया. So I could not say. You have to be very precise, very clear with your instruction, and always give variation. Before you give the main asana, you can just say, like adding a liner to it, somebody with a lower back pain or a history of pain, go to only this level. Right. Or be a little careful, because क्लाइंट का पेन है वो क्लाइंट को पता चलेगा. हम चाहे जितने अच्छे कोच हो जाएं, we can never understand anybody's present state of pain, because Right. there's a difference in a stretch pain, there's a difference between an actual pain, Right. right? So that we can help them understand that how it feels, we can diagnose, but you still cannot say. वो क्लाइंट को ही पता चलेगा, तो आप क्लाइंट को बोल के रखो. पर So, आपको ऐसा नहीं लगता कि यूजुअली एक और चीज होती है कि डिग्रीज, जो हम पेन की डिग्रीज होती हैं, तो स्लाइट स्लाइट डिस्कम्फर्ट, yeah. माइल्ड डिस्कम्फर्ट, स्लाइट डिस्कम्फर्ट, Mhm. देन पेन, एंड देन एक्सक्रूशिएटिंग पेन. तो ऐसे में भी क्लाइंट थोड़ा कंफ्यूज रहता होगा कि स्लाइट डिस्कम्फर्ट को भी पेन बता दिया जी, मैं तो बिल्कुल बहुत दर्द हो रहा है. ऐसा भी होता हाँ, है? तो देखो इन ऑफ कोर्स हर उस पे होता है. For a very example, I'll give you this example. Many people का मुझे सर्वाइकल है, हम्म. दिल टेल मुझे सर्वाइकल है, और मेरे को लोअर बैक पेन तो अभी चूरन की तरह सबको बटा हुआ है. राइट? सो इट्स लाइक एनीबडी दिल कम एंड दिल से, सो यू विल से सर्वाइकल. सो भाई सर्वाइकल तो हड्डी है, एज कोचेस हमें पता है, राइट? बट सर्वाइकल इज अ कंडीशन जिसमें आप नीचे भी देखोगे तो भी आपको नौशिया फील होगा. यू फील लिटिल डिजी, यू कांट इवन लुक डाउन for more than 3-4 seconds, right? So when you ask them, क्या आपके डॉक्टर ने आपको डायग्नोस करके दिया है? Then they'll say नहीं. Then now your question should be, so asking, questioning your client, understanding कि is it what they think, depending on Google information and all the other people around, कि किसी को था हाँ cervical तो मुझे भी है. Just a little slight tight muscle around your neck and shoulder doesn't mean that's cervical, right? Right. So that is a coach's responsibility to diagnose. कि क्या आपको डॉक्टर ने बोला है कि लिख के दिया है मैम, आप So पूछो उनसे, क्रॉस क्वेश्चन करो हमेशा. basically asking the right question to the client, एग्जैक्टली. वो भी यस. एक आर्ट है अपने आप में, या जो ज्यादातर कोचेस को नहीं मालूम पड़ती है. Probably with experience only it comes. इट कम्स विद एक्सपीरियंस, इट प्योरली कम्स विद एक्सपीरियंस एंड विद कांस्टेंट लर्निंग. Yes. व्हेन आई से कांस्टेंट लर्निंग, आई स्टिल काउंट माई सेल्फ कि मुझे बहुत चीजें नहीं पता है. मैं अगर 100 Yes. में से खुद को स्कोर दूं, आई वुड बेयरली गिव माई सेल्फ 25 or 30, बिकॉज मुझे लगता है मुझे अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है. फॉर मी एवरी क्लाइंट कम्स एज अ न्यू लर्निंग फॉर मी, right? So again, right questions, ask them, ask for questions, ask for diagnose कि आपने कोई MRI कराया है. Now people will come, मेरा ना बहुत lower back में pain है and I can't even sit and stand, could be spasm. So they straight away say, there are few clients who straight away say कि मेरे को disc का problem है. But when you ask them, आपने MRI कराया? Did you go to the doctor? He's like, नहीं, मेरे डॉक्टर ने बोला पेन किलर खा के अभी वेट करो, अभी एक हफ्ते बाद करेंगे. But if the doctor is mentioning that it is a disc, it could be a disc. Has he or she, the doctor has diagnosed you? Has he taken an MRI? Are you sure? Hmm. If not, go through it.
I mean, lower back pain is not always because of your lower back. It could be absolutely because of your glutes being tight. Yeah, dysfunction of Right? glutes only, yeah. हाँ, तो वो है, तो वो डायग्नोस अगेन, जो पाकी फॉर्म भरवाते हैं ना, वो इसीलिए भरवाते हैं हम. There's a form, proper fitness. So all Paki form is something which all the fitness coaches, they're very well aware of it, why we use it, and that gives you a complete data and history of your client, so that you can train your client in a better fashion. Right. So how do you uh, motivate your clients maybe to reach their fitness goals? How do you do that? See, first thing, I work on myself, Okay. right? Just So, for example, जैसे हम बोलते हैं ना, गंजे डॉक्टर की दवाई नहीं बालों की दवाई नहीं बिकेगी ना. So if myself, if I myself am not keeping and taking care of myself as a coach, अगर मेरा lifting खराब है, मेरा form and technique खराब है, if मेरा body comp is not apt, yeah. as coaches we are moving, we are visually, we are what do you call it, business card for ourselves, Yeah. right? Right. So I cannot afford. I mean, if I'm telling you कि भाई आपको ये खाना चाहिए, आपको प्रोटीन खाना चाहिए, आपको कार्ब्स कम खाने चाहिए, आप XYZ, और मैं फिर एक पोस्ट डाल दूं, या मैं एक रील डाल दूं, या सोशल मीडिया पे मैं डाल दूं, मैं भटूरे छोले खा रही हूँ, तो मेरा क्लाइंट भी तो बोलेगा खुद तो दबा के खा रही है और हमें मना करती है. So Right. you have to be, you need to understand there's a very thin line between practicing what you preach, right? You Mm. just cannot give gyan to everybody else and you're not doing the same, Yeah. So right? इसके ऊपर केदार सर बोलते थे, I don't practice what I preach. I preach Mm. I practice. Exactly. Yes. Maybe So थोड़ा we need to, and we should be. So the first thing is I keep a check on myself, that how constant I am, how disciplined I am with my training, right? right. Am I feeling productive with my training? मेरा progression हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Mm. Because I know anybody and everybody I am training has got those eyes on me, Yeah. right? So if my body comp is not matching my words and my knowledge which I'm delivering, Mm. I'm not going to make clients, right? बिल्कुल. Second, when it comes to motivating the client, you need to understand we are coaches. हमारा तो काम है, हम पूरे दिन जिम में अंदर बाहर हमारे आसपास हमें फिटनेस ही है. But for them, they have a lot other things apart from just being fit. So they are not seeking, of course, they everybody has this dream of getting those six pack abs, right? Very chiseled body. But वो उनका ना एक ultimate वो नहीं है, but they just want to be pain free, right? And be more functional. So making them understand, giving them realistic goals with right knowledge, ठीक है, कि आप उनको क्या बोलो, and then making slow changes. एक ही दिन में धूम नहीं मचानी चाहिए कि आज ही सारा वर्कआउट करा दिया और वो 3 दिन तक बेड से नहीं उठा. अरे सर आज से शुरू करते हैं, चलिए आज का वर्कआउट डन, 3 दिन तक लौट के नहीं आएगा. You need to understand. So go slow and keep telling them, keep repeating to yourself, understand your clients uh, history, not history, I'm sorry, their daily lifestyle, Mm. that how much do they sleep, what are their work timings, how much do they eat. So guiding them with the right nutrition, थोड़े थोड़े changes करके. आप एकदम से किसी के change ही कर दो अगर nutrition में भी, तो भी वो बंदा craving से परेशान हो जाएगा, right? Because he's been doing that for decades. आप एकदम से सब कुछ बंद करा के, अभी उसकी lifestyle already वो 12-14 घंटे काम कर रहा है, if he or she is a businessman, है बहुत सारा stress है, whatever their lifestyle is, but this 1 hour need to add value, not that it should feel like a punishment for them for eating or doing or not working out in the past. So you have to have a balance in it and then create a program. So this also comes with experience and Right. how you put into your life, right? You cannot be very pushy to your client So how कि do नहीं you करना ही करना है आपको. right? So how do you assess clients' fitness levels and then customize the programs? How do you do that? So like as I mentioned that we do a fitness testing after the PACU and everything. We go through a little bit of, so there's a fitness testing program which most of certified coaches from the good institute, they know it, they're aware of it. जिसमें हम आपका endurance check करते हैं, आपकी strength check करते हैं, आपका range of motion क्या, आपकी range क्या है, कितना आप कर पा रहे हो, and depending on that, that's how you design, because basic doesn't change, right? When we say basic doesn't change, कि अगर आप squat कर रहे हो तो squat change नहीं होगी, आपका range decide करेगा and it can be improved, Yeah. right? So not necessarily the first day the person can squat
बॉडी वेट वाले भी नहीं, आप अगर आप कर रहे हो तो बॉडी वेट में भी पूरा नहीं बैठ पाते हैं. सो उसके लिए क्या प्रोग्रेशन होगा, मोबिलाइजेशन कैसा होना चाहिए, वार्म अप कैसा होना चाहिए. So that is all again up to the coach. So that's what we decide. So after going through the fitness testing, that's how we decide कि these are the weak pointers and this is the strength part. कि किसी की endurance बहुत अच्छी होती है लेकिन strength कम होती है, कि बहुत देर तक दौड़ तो लेंगे लेकिन अगर 5 रेप में भी उसको थकान हो रही है इसका मतलब मसल नहीं है. बिकॉज वी अंडरस्टैंड आप दो तरीके से थकते हो, या तो आपकी मसल गिव अप कर देती है या तो आपकी सांस फूल जाती है, राइट. सो अगर आपकी सांस फूल रही है इसका मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, आपको उस पर काम करना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे. यू नीड टू वर्क ऑन योर कार्डियो ऑल्सो. या मसल बहुत जल्दी थक रही है तो थोड़ा स्ट्रेंथ पे भी काम करो. इट हैज टू हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ राइट. एंड दैट इज व्हाट द कोच डिसाइड्स. या सो स्टार्टिंग में आपने एक वर्ड का जिक्र किया था, पारक्यू. सो फॉर द व्यूअर्स, पारक्यू इज फिजिकल एक्टिविटी रेडीनेस क्वेश्चन. यानी आप कितना प्रिपेयर्ड हो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए. उसके अंदर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, कि आपकी एज क्या है, आप क्या काम करते हो, आपकी लाइफस्टाइल किस तरीके की है, क्या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हो या नहीं, आपको किसी तरीके की पास्ट में इंजरी हुई है नहीं, आपको किसी में दर्द होता है या नहीं, आपको ब्रीदिंग लेते हो दर्द. तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं. Physical activity readiness questionnaire, in short, PARQ. Yes. In short, PARQ, yes. So that is the first step of And hitting the client's workout and making him hit or her the workout. So yeah, that's what we do. so so वो मॉडिफिकेशन जो होती है एक्सरसाइज के अंदर, अगर लेट्स से किसी को कोई इंजरी है या कुछ इस तरीके से, हाउ डू यू असेस दैट थिंग? किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, किसी का एंकल मोबिलिटी अच्छा नहीं है, लेट्स सपोज, तो कैसे, हाउ डू यू गो अबाउट दैट? I missed the question again. I mean, So, can you please repeat it? so basically, let's say कोई client आया, Mhm. let's say with limited mobility in the ankle, Mhm. okay, और आप उसको assess कर रहे हो, तो Mhm. कैसे आप उसको modify करवाते हो, उसके movements में किस तरीके से modification लाते हो? Like for example, let's say doing a squat, Mhm. ankle में अगर वो limiting factor है तो हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं improve? Like you must be very well aware of it. Ki ever since we have been using the Western toilets, the ankle mobility has gone for a toss, Yes. right? So range cut चुकी है. So hence anybody who is willing to do, for example, a squat and not able to sit, the first primary hamstring tight है, ankle भी tight है. So we give him little elevation on the heel. कि थोड़े से कुछ भी उसके नीचे में we put some elevation so that when the heel is lifted, it definitely helps them to go down with ease, with not that much of pain. Right. And then certain mobilities, of course. So before hitting the workout, mobilization is extremely, extremely important. राइट. सो वी हेल्प दैट पर्सन. सो मोबिलिटी में ही आपको पता चल जाता है कि वीक पॉइंट्स क्या है. Right. जब Right. आप उनको मोबिलिटी करा रहे हो आपको पता चल जाएगा, अरे ये तो बहुत ही टाइट है. सो hence as a good coach every coach would know कि just because the ankles are so tight we need to put some elevation rather than pushing the person and making that person squat all the way down as to as no. So that's how you help that person. And or if somebody who's facing difficulty in going down because of the ankle, elevation भी हो रहा है तब भी अगर हो रहा है, so we can start from the very basic of making them sit on a bench and then getting up and down. Once they get used to of that level, then we can slowly and gradually we can reduce and make them sit. So पहले supported कराइए and then you can go ahead with the unsupported movements and then helping them advance going further. Fantastic. Or so you give both, right? You do, personal training, you give strength training, and you also give yoga sessions to the clients. How do So you? I've like with the number of years I've added on more feathers in the cap. So Huh, I'm a Pilates instructor as well. I'm a we'll, come- stability ball we'll, instructor, we'll come to strength coach. we'll come to Huh? Pilates. We'll come to Okay. Pilates in So that. I'm just Huh, mentioning. So it's like multiple things in hand. Yeah. yeah. So कैसे इसका मिक्सचर होता है? मतलब किसी भी क्लाइंट को जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ डू यू इनकॉर्पोरेट योग के भी कुछ एसेंस? फॉर Yes. एग्जांपल माइंडफुलनेस, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. या कभी कोई क्लाइंट बोलता है बहुत स्ट्रेस है किसी तरीके से, सो डू यू टीच देम कि क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर सेशन के अंदर? कुछ इस तरीके से होता है वो? Yeah. I do that. I definitely do that.
being skilled for both of it, for yoga and strength training. I understand not every day would be your PR day, your Yeah. personal record day. Okay. Not every day would be well, you feel fed up and you don't want to do yoga, of course, कि भाई आज yoga करने का मन नहीं, आज कुछ exciting करते हैं. Like we also have moods and everything. Yeah, so I help people understand. So knowing myself, the benefit of right breathing, right? Breathing itself helps you a lot in managing your stress level, So right? let's suppose मैं एक सिनेरियो देता हूँ. कोई क्लाइंट आया, सेशन है, Mhm. उनका ऑलरेडी बुक्ड एक सेशन है जहाँ पे वो उनकी पिछली रात बहुत अच्छी नहीं गई, और क्योंकि कमिटेड थे, दे स्टिल शोड अप फॉर द सेशन, विच इज वेरी गुड. Mhm. ज्यादातर Mhm. कैंसिल कर देते हैं कभी कभी. पर Mhm. लेट्स से वो क्लाइंट आए, उस स्ट्रेस Mhm. भरे उसमें आए, एंड यू गेज दैट कि भाई स्ट्रेस में है. ओके. Yes. एंड लेट्स से कि आपको था कि आज हमारा स्केड्यूलिंग है कि हमें आज स्क्वाट्स करने हैं या फिर लेग का कुछ भी करना है इस Push दिन, day, full day legs, whatever it was. Yeah, yeah, कुछ yeah. भी वो Mhm. प्लान था, एंड नाउ यू नो दैट द क्लाइंट इज स्ट्रेस्ड. Mhm. How are you going to go about that? मतलब are you going to start off with calming that person, or maybe not calming is not the right way, maybe understanding their position and giving them something to being mindful about the situation, something of that sort. How do you do that? So, yeah, I mean, like with experience, it has added up to my knowledge as well, that yes, it becomes very like the moment my client comes, the first question is I always my energy also gets transferred, right? So as a coach, if you are a happy coach, when I say na happy, if you are excited about your work, your client will feel excited. अगर और आपके ऑपोजिट वे भी हो सकता है ना, अदर वे अराउंड. and yeah, so other way around में तो you need to control your energies ना, you can't be getting. तो फिर तो आप हमेशा लेजी रहोगे because client will like अरे आज मन नहीं है, आज कुछ हल्का फुल्का कर देते हैं, right? बिल्कुल So बिल्कुल. yeah, like as you mentioned that if the last night wasn't good for them, or the a day before wasn't very happening for them, and they are low on energy and they had their head down, so yes, gauge that, try talking it out loud कि okay, I understand आपकी नींद अच्छी नहीं थी or whatever. So that's where the my yoga part comes for the rescue. So I do not push them at all. I just start my session with light mobility, which we in yoga we call it as sukshma vyayam. So we start and I keep talking to them. So I don't talk about the last night. I don't talk about what happened, what it is. So I just talk about them like kuch khaya hai aapne, have you had anything before your training or after the training, what do you plan to do, or how are you exactly feeling right now? Is are you feeling anything heavy with your head? Yeah, in generic talks, which I do, and then I make them do stretch and release. So stretch and release with yoga, when it comes to asanas, they are very, very good asana, which helps you calm your central nervous system and you feel good about it. And I'm very happy. There was a customer who actually shared my feedback also for the same, because she wasn't feeling good at all the next day when she came for the class, and she was a little irate. And so that day, the moment when she came, I guess that she's not in the mood to train today. There's something wrong with her. So I made her have sip some water, and I was like, so she's like, so what are we doing today? And I said, we are not doing workout today. We are not doing strength training today. So that immediately she's like, okay, so then what? Today we are going to do yoga. So for yoga, when I took her, and then I just made her realize that you're going to do nothing. Just early, I tried talking to her, then I could see that she's not even in the mood to answer. uh, Yeah, it's like I'm just there for you. On the contrary, she was very happy. I mean, like, I was very happy that she's still with that mood. She's still standing because she was committed to come. So we did not had no words in that session, absolute no conversation apart from me giving instructions for the asanas. but ये अच्छी Then बात she है, left. because you are skillful in yoga, and Yeah. that's what you could offer yoga. Let's suppose you would have been a martial artist. तो फिर क्या बोलते हैं? Let's go for a fight. मार्शल आर्ट में तो फिर मैं बोलती मार्शल आर्ट में होती तो आई वुड हैव आस्क्ड her to use the punching bag or something and just let go of your frustration, or if you are feeling bad on something, just let it out, just vent it off, just put it down, वो निकाल दो फिर तो. Care, I mean, jokes apart. So ये एक बहुत अच्छी चीज है, because if you're not excited about your work, and if the client is stressed and you become stressed, so वो कहानी खत्म है वहां पे.
हाँ, that's where I mean like यही गड़बड़ हो जाती है ना कि कोचेस कम ना देर अरे यार ये फिर ऐसे ही आया है, ये इसको आज भी वर्कआउट नहीं करना है। हाँ हाँ कल ना कि अरे मेरे को तो आज पुश डे कराना था, आज तो इनका देखो डेडलिफ्ट है, फिर बोलेंगे नहीं, इट हैज टू बी, यू शुड हैव सम पार्ट ऑफ एम्पैथी, राइट? या तो थोड़ा सा रखना चाहिए। आई मीन जस्ट टेक योर क्लाइंट्स एज योर ओन। आई मीन लाइक टू विथ मी it is I find it very connected. Anybody I'm training, I train him, her as it like a part of my family. What if I'm training my father like that? What if I'm training my brother like that? Right? So if the younger ones is like, what if my daughter is at this point? अगर उसको ऐसा feel हो रहा था, how would I have handled it, right? so So very I find it, so that becomes very easy for me. I mean, like naturally it comes. highly important point because most of the people, I mean, I think I remember initially when I was starting my career, यंग होते हो और यंग 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 के अलावा इमेच्योरिटी बहुत होती है, आपको ट्रेनिंग रिलेटेड इमेच्योरिटीज होती है आपके अंदर, Mm. और आपके अंदर वो समझ नहीं होती। एक अगर एक बेसिक इक्वेशन एक सेंसिटिविटी वाला जो इशू है, एंड इफ यू Yes. आर इमोशनली केपेबल ऑफ समथिंग, यू टेंड टू ओवरलुक ऑल दिस थिंग। आपको लगता है आज फिर से वही कर दिया, पर Mm. ट्रेनर ये नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट्स द बैकड्रॉप ऑफ दैट थिंग। सो Mm. अगर ये कोई समझ ले एम्पैथी, टू एम्पैथाइज विद दैट कंडीशन, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। ये मेरे को समझने में, सीखने में, मुझे लगता है शायद पर्सनली इमोशनल वो जो इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, वो शायद बहुत लेट आया, तो मेरे Mm. ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत लेट रिफ्लेक्ट हुआ वो। सो अगर किसी को वो पहले से ही समझे, देन इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। और अपना एक जो फैक्टर यू जस्ट मेंशन्ड कि आपकी अपनी खुद की एक्साइटमेंट, आपकी एनर्जी उसके अंदर जानी चाहिए, उसकी नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। Mm. इसके Yes. ऊपर एक स्टोरी भी याद आ गई कि एक आदमी होता है, उसके पास एक भैंस होती है जो खाना नहीं खा रही होती। Mm-hmm. तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है कि ये दवाई ले लेना और ये आपको भैंस को खिलानी है। कहता है भैंस को कैसे खिलाऊंगा मैं? तो Mm. मैं बोला कि आप एक पाइप लेना, उसमें ये दवाई डालना और भैंस के मुंह में डाल देना और फूंक मार देना। तो कहता है ठीक है। और Mm. जैसे वो जाता है उसके मुंह में डालता है, उससे पहले भैंस फूंक मार देती है। तो वो Okay. उल्टा उल्टा हो जाता है वो, उसके मारने से पहले भैंस ने फूंक मार दी। तो Okay. तो ऐसा ना हो लोगों के अंदर, आपको फूंक मारनी है पहले। Okay. हाँ, I mean, yes. हाँ, ये तो है. That's a funny one. Good one, yeah. So हाँ, this is what it is. I mean, and ये ना, like as you said ना, maturity वाली बात जो आपने बोली ना, I've been little, I would say I've been lucky and I've been blessed to have, when I've entered, वो होता है ना कि you meet the right people. राइट You, you, your personality is decided by people around you. राइट Someone, you get influenced, right? So if you have right people around you, you tend to learn. मैं कह रही हूँ 100% नहीं learn किया आपने, उसका 10% भी अगर add on किया है ना, it makes a lot of changes to you. When I see myself, because of the right people around me and the right guidance, like just by doing yoga, yog certification, small yog, then I did my Ashtang training, and then I did my K11. And when I met Kaida Kapadia sir, so we all know what big influence he made on anybody and everybody who have met him, right? So we are amongst those blessed people who have not just met him, we have lived a portion of our life with him, working along, being around with the, so एब्सोल्युटली that had added immense value, not as just as a mentor, as an educationist, as knowledge sharing, whatever he used to, but even as an individual, राइट right? And then we have worked along together, right? You and I, we were in the same company, we have been a part of K11, and then even being in the same, hum somehow we are connected now, so we know, we understand, we get, we adapt, we learn, and we we put that in ourselves कि हमें जो add-ons अगर कुछ मिलता है किसी से, there's no ego thing about it, right? So it adds up. So even at the moment, whosoever is around me is adding immense value. The company I'm working with right now, they've added enough value to me that I'm every day progressing.
Right. So my everyday excitement of going to work is not because I'm getting salary and I'm getting paid. Of course, that's one thing. Mm. But that when I get up, there is not even a single day touch wood, and I would say that ऐसा होना भी नहीं चाहिए, because the day that happened, I'll quit. I Yeah. might not be in fitness industry anymore. The day I feel it is a burden and यार training कराने जाना है. No. If that happens, that same very day, I know my career won't be going up, or forget career, as an individual, I won't be growing, because then I'm not in the right industry. I should move up. So there is an excitement for me, and we all know, no parent, nobody, his family tells him or her to go and become a fitness trainer. Yeah, 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 absolutely. राइट, वो आज की डेट में भी नहीं बोलते हैं कि अच्छा, अरे या जब तक आप बहुत अच्छा नहीं कर रहे होते, बहुत अच्छा कमा नहीं रहे होते ना, तो फैमिली से भी वो सपोर्ट नहीं आता है कि अरे मेरा लड़का या मेरी बेटी ना फिटनेस कोच है. They don't say, right? So hence this is a passion driven industry, completely passion driven industry, right? Good. So इसमें भी लोगों को समझना चाहिए, अगर आपके डोले अच्छे हैं तो आप खुद की ट्रेनिंग अच्छी कर सकते हो, बट अगर आपको दूसरे को ट्रेन करना है, यू हैव टू बी कनेक्टेड, यू Yeah, नीड टू फील उसको डायरेक्टली. हमें उसको बॉडी बिल्डर नहीं बनाना है, बट एडिंग वैल्यू, देयर इज अ डिफरेंस फॉर इट, राइट? yeah, तो yeah. वो अगर समझ में आ गया, यू वुड गो लॉन्ग रन, एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद इट.